Hello and welcome to the first video about STAR approach, the first approach that you can use in your interviews and daily conversations when you are explaining situation to someone. And trust me, this will going to change a lot. जब भी हम किसी से बात करते हैं मोस्टली इन इंटरव्यूज़ या फिर हमें किसी को सिचुएशन एक्सप्लेन करनी होती है या हमारे बहुत कॉमन कॉन्वर्सेशंस होते हैं what happens is we need to define situation because situation is one of our factors जहाँ हम define करते हैं कि situation क्या है and then we defined the action or what we did about that situation हमने क्या किया and then we defined the results कि उसके बाद हमारा output क्या था so situation action and result हर रिस्पॉन्स में आपके बहुत कॉमन होते हैं और ये बहुत डिटेल में जो एलिमेंट्स है हेल्प करते हैं to define your answer. Now magically STAR approach will help you to bring all of these elements situation, action and result all together in your communication message to make it impactful and more clear when it comes to making an impact on other person and creating that crystal clear understanding for your message. So this approach will help you break down all of these elements into small part. This is very important and it is a very famous tool used in interviews. So in this video, I'm going to take one example for you guys so that you understand this entire approach much better. And we will going to discuss each step one by one and how to define it and then how to really apply it on your message. Now to really give you a complete background on what are we discussing, this is a situation right now. So let's say you're a part of a marketing team and you're working on a product. एंड आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है बहुत जल्दी एंड देर इज़ अ एड कैंपेन जो आपने रन किया है ऑन इंस्टाग्राम ऑन फेसबुक बट यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स यू आर नॉट गेटिंग ऑर्डर्स नाउ एज अ टीम मेंबर ऑफ कोर मेंबर ऑफ दिस एंटायर प्रोजेक्ट आपको बोला है कि यू हैव टू फिक्स इट ठीक है सो दिस कुड रियली कम एज अ क्वेश्चन टू यू ऑन इंटरव्यूज़ कि आपने वो कैसे किया डिफाइन जैसे पास्ट एक्सपीरियंस को डिफाइन करते हैं मोस्टली हमसे इंटरव्यू में मोस्ट कॉमन सिचुएशन क्वेश्चंस आते हैं कि लेट्स से यू हैड अ प्रॉब्लम विद अ टीम मेंबर हाउ डिड यू फिक्स इट लेट्स से यू हैड अ इशू विथ योर प्रोजेक्ट और डेडलाइंस हाउ डू यू फिक्स इट सो दिस आर ऑल सिचुएशनल क्वेश्चंस जहाँ पे सिचुएशन के साथ आपका अप्रोच डिफाइन करना होता है एंड दिस एंटायर framework will help you to do that. So let's jump into the first situation or what was the scenario. So for example, you will say something like, I was a part of marketing team working on a new product launch and the ad campaign was not performing well and we were getting close to the launch deadline, which was causing some stress among the team. All right, so you understand we defined the situation very clearly that I'm a part of a marketing team and we were preparing for a product launch. So in this entire message, if you will notice, I have clearly defined the scenario. So first step, if you are answering a situational question in interviews or any other situations, you have to define the scenario very clearly in at least 2 or 3 lines so that they understand what's the background. नाउ कम्स जब आपने सिचुएशन डिफाइन कर दी कि सिचुएशन क्या थी अब आपने क्या किया उस सिचुएशन में और आप क्या कर सकते थे उन चीज़ों को डिफाइन करना इज़ अ मेजर टास्क so it can go something like this. So I was responsible to improve the performance of the ad campaign to increase the lead and ensure we meet the target for our launch. So task means what you were responsible for. आप किस चीज़ के लिए responsible थे तो मैंने इसमें define किया that I was a core team member and I was responsible to generate the leads and to address the problem. So task is simply आपके ऑब्जेक्टिव क्या थे उस पूरे सिचुएशन में. नाउ कम अब पूरे सिचुएशन में आपके ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो गए कि आप किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे. अब आप उसके बारे में आपने क्या किया वो आपको डिफाइन करना है. ये इंटायर चीज़ें जो हैं वो पास्ट में डिफाइन होंगी. सो इट विल गो समथिंग लाइक आई एनालाइज द कैंपेन डेट टू अंडरस्टैंड व्हाई द एड्स वर नॉट परफॉर्मिंग. Then I updated the ad copy, adjusted the target audience a little bit, and run tests to determine which ad version work best for us and our customers. So in this action point, what I really means is
that we identified the action, what action we did. So we analyze, I as a personal team member analyze the situation and compare two ads to really target the audience. तो ये मेरा एक्शन था, सिचुएशन डिफाइन करी, फिर मैंने टास्क डिफाइन किया कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, और यहाँ पे थर्ड स्टेप में आई डिफाइंड कि मैंने एग्जैक्टली क्या एक्शन लिया टू कम अप विद द रिजल्ट्स. अब as suggested, the last one is defining results. आपका output क्या था? What is the ultimate thing that you have achieved? So as a result, the updated ad increased lead generation by 25%, and we met our sales target for product launch, which really helped boost the company overall revenue for the quarter. So by using this entire STAR approach, we have really aligned and framed our entire answer. So आपको वो स्टोरी याद है मेरी, जब मैंने बताया था कि सिचुएशनल क्वेश्चंस में आंसर देना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि हमें कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, किस सीक्वेंस में बोलना है. So this entire approach will help you to understand better what would be the sequence. You can really just get on to the three elements, that is situation, action, and result. You can remove the task if you want to, but this sequence will give you better understanding, and it will going to make a lot more impact in your entire structure. So you have to do a little practice, but once you understand this entire framework, it is going to be a game changing for you to really communicate effectively. So there is an entire workbook that we have created for you guys to practice this approach, and there are multiple examples that you can go through and understand how do you define from different industries. And I hope that you will use this, and I'm sure that this will going to make a lot of change in your communication. I'll see you in the next framework, that is AIDA model. See ya.